Hello everyone, I am Aditi Arora from ABES Engineering College, Ghaziabad. In today's video lecture, we will be continuing with the Unit 2 Process Synchronization from the Subject Operating System. So the outline of today's lecture is Peterson's solution for critical section problem. In the last video, we have discussed about what is critical section and what is critical section problem. And also we have discussed that if we formulate any solution for critical section problem, then that solution must satisfy the three requirements, that is mutual exclusion, bounded weight, and progress. So here is the Peterson solution. It is basically a classical software-based solution to the critical section problem, and it may not work correctly on the modern computer architectures. Like we already discussed many times that nowadays we use multi-programmed operating systems and time-sharing operating systems. Then it may be possible that this solution, that is Peterson solution, may not work on some of the modern computer architectures, but it provides a base it provides a good algorithmic description on how to solve the critical section problem, keeping in mind that whatever solution we formulate to solve this, that solution must address the three requirements, that is mutual exclusion, progress, and bounded weighting. Now, an important point to discuss here is that Peterson solution is basically restricted to two processes, and we name those processes PI and PJ. We use this naming convention that one process is denoted by process PI and other process is denoted by PJ. Now, also, Peterson solution require two data items to be shared among the two processes. Now, what are those two items? First is the variable turn, whose data type is integer, and second is the variable flag, whose data type is Boolean. Now, what is the purpose of using this turn variable? This turn variable indicates whose turn it is to enter the critical section. So if int turn is equal to J, means it is the turn of process J to enter the critical section. And if it is int turn is equal to I, that means process I has the turn set to enter the critical section. Next, we have the flag variable. Now, flag variable is of type Boolean. That means the value can be true or false. So it is used to indicate that if a process is ready to enter the critical section. So इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, whosoever process wishes to enter the critical section, it will set its flag to true. Flag I is equal to true, that means flag process I wants to enter the critical section. And if flag J is equal to true, that means process J wants to enter the critical section. Now, let us understand Peterson's solution in a more better sense. Here we have a do-while loop. Here the flag of I is set to true. That means process I wishes to enter the critical section. And it set the turns is equal to J. Means Peterson solution is also called as a humble solution. पीटरसन सॉल्यूशन को बेसिकली हम्बल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हम्बल एल्गोरिथम भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए आप कि प्रोसेस आई ने अपनी फ्लैग को ट्रू किया है, मींस प्रोसेस आई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, बट वो टर्न किसकी सेट कर रहा है? जे की सेट कर रहा है, बिकॉज प्रोसेस आई इज हम्बल towards J की ठीक है, I wish to enter the critical section, but it's okay. I will set your turn to enter the critical section. Now this is a while statement. यहाँ पर देखिए आप फ्लैग ऑफ जे यहाँ पर हमें क्या रिटर्न होगा? दैट विल बी
ट्रू रिटर्न होगा, एंड ऑपरेटर लगा है, टर्न इज इक्वल टू जे, सॉरी फ्लैग यहाँ पर हमें फ्लैग ऑफ जे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा, एंड टर्न इक्वल टू जे, ये हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू। सो फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। और जब भी ये वाइल स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, यानी कि हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे, ठीक है, तो प्रोसेस आई जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन में उसका काम खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस आई अपने फ्लैग को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, दैट नाउ आई do not want to enter the critical section. It will come out of critical section and execute in its remainder section. So this is how process PI works. Access the critical section, request for critical section, then access the critical section, and then come out of the critical section and gives chance to the other process. Similarly, हमारे पास प्रोसेस पीजे के लिए भी कुछ यही कोड है। फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, प्रोसेस पीजे जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा, विश करेगा, तो वो अपने फ्लैग को ट्रू सेट करेगा। अगेन इट इज अ हम्बल एल्गोरिथम, तो वो किसकी टर्न सेट कर देगा, प्रोसेस आई की टर्न सेट कर देगा। अगेन ये वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फ्लैग ऑफ आई। अब फ्लैग ऑफ आई क्या है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज फॉल्स, because flag j का true है, and turn is equal to I. Yes, this is true. So again flag false and true will be false. और जैसे ये statement false होगी, process pj will enter in its critical section. Once it will complete its execution in the critical section, it will set the flag j to false, that now I do not want to enter the critical section, and he will come out of the critical section and work in the remainder section. This is how process PI and process PJ can first request for critical section, then execute in the critical section, and then come out of the critical section. But the question is, अब हम समझते हैं कि अगर प्रोसेस पी आई और प्रोसेस पी जे अगर सेम टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। क्या ये सोल्यूशन, क्या ये कोड जो है वो हमें हेल्प करेगा कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली जो है हर प्रोसेस को एक्सेस करा सके क्रिटिकल सेक्शन। लेट्स सी। सो सबसे पहले मान लो कि प्रोसेस आई ने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया और प्रोसेस जे ने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया। प्रोसेस आई ने टर्न किसकी सेट की, जे की, एंड देन प्रोसेस जे ने टर्न किसकी सेट कर दी, आई की, यानी कि जो लेटेस्ट टर्न वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज आई, राइट। अब अगर हम सोचें कि व्हाइल कंडीशन किसकी पहले एग्जीक्यूट होगी, हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल प्रोसेस पी आई जो है अपनी व्हाइल कंडीशन को चेक करता है। सबसे पहले वो देखता है फ्लैग जे इज इक्वल टू यस इट इज ट्रू, एंड टर्न इज इक्वल टू जे। क्या ये हमारा ट्रू होगा, नहीं, बिकॉज लेटेस्ट वैल्यू टर्न की क्या है, आई, सो दिस वैल्यू विल बी फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट्स इन फॉल्स। सो जैसे ही ये while कंडीशन फॉल्स होगी, द प्रोसेस पी आई विल एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, राइट, एंड इट विल डू इट्स वर्क इन क्रिटिकल सेक्शन। अब हमें चेक क्या करना है कि क्या सेम टाइम पर प्रोसेस पीजे भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। चेक करते हैं। फ्लैग जे इज इक्वल टू ट्रू, टर्न ऑफ आई इज सेट। सो यहां पर हम देख लेते हैं फ्लैग आई हमें क्या मिलेगा, ट्रू। यस, प्रोसेस आई भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता था, एंड टर्न ऑफ आई इज ऑल्सो ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। यहां पर सेमी कॉलन लगा है, तो यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इनडेफिनेटली ये वाइल लूप प्रोसेस जो पीजे है वो इस वाइल लूप में ही चलता रहेगा, ठीक है, एंड इट विल हैव टू वेट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। कब तक, जब तक ये वाइल कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। वंस द प्रोसेस पीआई completed its execution in the critical section, what process pi will do, it will set its flag to false. As soon as process pi set its flag to false, again this while condition will be checked because ये loop चल रहा है, ठीक है। flag I is equal to true and flag I is now false. The updated value of flag I is false. Turn of I is equal to true. False and true. Now it will become
false, as soon as the while condition becomes false, process Pj will access its critical section. And then when process Pi is done with the critical section, it will set its flag to false. So this is how we can see that though two processes want to enter the critical section at the same time, but with the help of this code, with the help of this code solution, only one process at a time is accessing the critical section and other process is waiting for the previous process to complete its execution in the critical section and then to perform its work in the critical section. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे वो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और बाउंडेड वेट जैसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेफिनेटली यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि जब प्रोसेस पीआई क्रिटिकल सेक्शन में था, प्रोसेस पीजे इस वाइल स्टेटमेंट में ही मूव कर रहा था, लूप अराउंड हो रहा था, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा था, हेंस म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि हर प्रोसेस की जो है वो टर्न आनी चाहिए। इफ somebody is not working in the critical section, then other process can enter the critical section. So हमने देखा कि जैसे प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम फिनिश करके उसने अपने फ्लैग को फॉल्स सेट किया, तभी जो है प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने लगा। सो यानी कि यहाँ पर प्रोग्रेस भी इंश्योर हो रही है। नाउ वी विल चेक कि बाउंडेड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यस, बाउंडेड वेट भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज प्रोसेस पी आई एक बार एग्जीक्यूट होने पर चांस किसको दे रहा है, प्रोसेस पीजे को, बाय सेटिंग इट्स फ्लैग टू फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोसेस पी आई अगेन अपने फ्लैग को ट्रू रखता है तो यानी कि अगेन ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं होगी, और अगर ये फॉल्स नहीं होगी तो यानी कि प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। अगेन किसकी टर्न आएगी, प्रोसेस पीआई की, बट दिस इज नॉट हैपनिंग हियर। प्रोसेस पीआई इज सेटिंग इट्स फ्लैग टू false and thus giving chance to process pj in the alternate fashion. So both the processes pi and pj are executing in the critical section in the alternate fashion. Hence we can say that bounded wait is also satisfied. So we can see that the Peterson solution satisfies the requirement of mutual exclusion, progress, and bounded waiting. So the concluding remarks for this lecture is that Peterson solution is a two-process solution for the critical section problem, and it uses two data items to be shared among the two processes, that is turn variable and the Boolean variable. And the second and the third conclusion is that the Peterson solution satisfies the three basic requirements of a critical section, that is mutual exclusion, bounded wait, and progress. These are the references for today's content. Thank you.